Assalamualaikum, Omar Baig. कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle FX 22.1 and ORDS 21.4 with database 19C in Windows 10 InshaAllah quickly. आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle FX 22.1 और ORDS 21.4 को database 19C के साथ Windows 10 में इंस्टॉल किया जाता है जल्दी से. First we will create folder in C drive with the name 19C_22.1. सबसे पहले हम C drive के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 19C_22.1 के नाम का और उस फोल्डर के अंदर हम मजीद दो फोल्डर बनाएंगे DB और ORDS के नाम के बिलतरतीब. And under this folder we further create two folders with the name DB and ORDS respectively. Extract Oracle database 19C in DB folder which we have just created. Extract करेंगे Oracle database 19C को DB के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है. Extract ORDS 21.4 folder in ORDS folder which we have just created, so we do not need to copy and paste ORDS folder. ORDS 21.4 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे हम ORDS के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है. तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके चस्पा करना नहीं पड़ेगा. The Java version which we are using is Java 8 update 211. जो Java का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो Java 8 update 211 है. Oracle FX 22.1 downloadable file name is this one. We will extract this folder in 19C_22.1 folder, so we do not need to copy and paste Apex folder. Apex 22.1 का जो डाउनलोडेबल फाइल है उसका नाम जो है वो ये है. इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 19C_22.1 के फोल्डर के अंदर. तो हमें Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा. The downloadable link of all the files are available. Furthermore, we have already downloaded तमाम डाउनलोडेबल Oracle लेस डाटा सर्विसेज और Oracle FX 22.1 का डाउनलोडेबल लिंक जो है वो मौजूद है. अलबत्ता हमने उनको पहले ही डाउनलोड कर लिया है. Run database setup with administrator rights. database का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से.
ऑप्शन will be create and configure a single instance database. hit next button. ऑप्शन जो है create and configure a single instance database का रहेगा. next का बटन दबाएंगे. ऑप्शन will be desktop class. hit next button. ऑप्शन जो है वो desktop class रहेगा. next का बटन दबाएंगे. Option will be use Windows built-in account. You can use other option as well. hit next button. Yes, use Windows built-in account का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे. आप कोई दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. next का बटन दबाएं. assign global database name, password and confirm password from your choice. uncheck create as container database option. hit next button. ग्लोबल डेटाबेस का नाम देंगे, पासवर्ड देंगे, कंफर्म पासवर्ड देंगे अपनी मर्जी से. अनचेक करेंगे क्रिएट एज कंटेनर डेटाबेस के ऑप्शन को और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे. Oracle Database 19C has installed at close button. Oracle Database 19C जो है वो इंस्टॉल हो चुका है. क्लोज का बटन दबा दें. ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड रीच वेयर एपेक्स फोल्डर इज अवेलेबल. कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, वहां जाएंगे जहां एपेक्स का फोल्डर मौजूद है. When we reach there, run this command. जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो फिर ये कमांड चलाएंगे. कनेक्ट विद SSDBA. कनेक्ट होंगे SSDBA से. check SGA maximum size by running show parameter SGA command. If it is less than 3000 MB, then we have to increase it. SGA maximum size पता करेंगे. show parameter SGA की कमांड चला के अगर वो 3000 MB से कम हो तो हम उसको बढ़ाएंगे. ये कमांड चला के तो ये 3000 MB से कम है. इट इज Now we will shut down database by running shut immediate command. अब हम database को बंद करेंगे shut immediate की कमांड चला के.
Now we will start database by running startup command. अब हम database को start कर रहे हैं startup की command चला के. We shut down database and start it again. So we will reflect the changes we did in SG maximum size. हम database को बंद करते हैं और उसको दोबारा चलाते हैं. Check SG maximum size again in order to make sure the changes we did as reflected. SG maximum size हम दोबारा पता कर रहे हैं ताकि तसल्ली कर लें कि जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है नहीं. तो जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है. The changes we did as reflected. Now we will install Apex by running this command. अब हम Apex को install करेंगे ये command चला के. Oracle Apex 22.1 है install. Oracle Apex 22.1 जो है वो install हो चुका है. Now we will run this command. हम ये command चलाएंगे. User will be admin, provide email and password from your choice. User जो है वो admin रहेगा. email और password आप अपनी मर्जी से दे दें. Now we will run this command. अब हम ये command चलाएंगे. Now we will run this command. Provide password for Apex listener and Apex slash public user, which will be Oracle in lowercase. अब हम ये कमांड चलाएंगे. पासवर्ड देंगे Apex listener और Apex slash public user जो कि Oracle लाएगा छोटे फॉर्म में. Exit this command form. इस command form को बंद कर दें. Open new command form with administrator rights. नया command form खोलेंगे administrator के राइट से. वहाँ जाएंगे जहाँ ORDS का फोल्डर मौजूद है. And reach where ORDS folder is available. And when we reach there, run this command. जब हम Now we will provide a configuration path where we want enter. If your port is 1521 then hit enter button. If your port is different then define your port and hit enter button. अगर आपकी पोर्ट 1521 है तो आप एंटर का बटन दबाते हैं. अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है तो आप अपनी पोर्ट लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं. Now provide option 1 or 2 both. You can provide both of them. अब हम दोनों ऑप्शन या दोनों में से कोई एक जो है दे सकते हैं. प्रोवाइड या सेट अपने सेट बता दें. एंटर. Provide password and confirm password for ORDS public user which will be Oracle in lowercase. password और confirm password देंगे ORDS public user को जो कि Oracle लाएगा छोटे और फॉर्म में. Enter. Administrator username will be this. Provide password and confirm password which you provide during database installation. Administrator username. Enter. Provide password and confirm password for Apex public user which will be Oracle in lowercase. password और confirm password देंगे Apex public user को जो कि Oracle लाएगा छोटे और फॉर्म में. Enter.
Provide password and confirm password for Apex listener and Apex Stress public user, which will be Oracle in lowercase. Password और confirm password देंगे Apex listener और Apex Stress public user को, जो कि Oracle रहेगा छोटे अक्षरों में. Enter. Enter. Now copy images folder from the Apex installation folder. Enter. Provide a path to Apex static resource location till images folder. अब हम Apex static resource location को images के folder तक का पता देंगे. Enter. Provide port from your choice or leave it as it is. आप port दे दें अपनी मर्जी से, yes को ऐसे ही रहने दें. When Oracle REST data services initialize a pair, we can access Oracle Apex 22.1. Remember, do not close this command prompt because if it closed for any reason, we cannot access Oracle Apex 22.1. However, we can reopen it as well. जब Oracle REST data services initialize लिखा आ जाएगा तो हम Oracle Apex 22.1 को इस्तेमाल कर सकेंगे. ये बात याद रखिएगा कि इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा, क्योंकि अगर ये किसी भी वजह से बंद हो जाएगा Oracle Apex 22.1 and ORDS 21.4 with database 19C has installed. Oracle Apex 22.1 or ORDS 21.4.